welcome to today's class. I hope you all understood the previous classes and also does your home assignments. So today we are going to continue the chapter that is crop production and management. Okay, so today we are going to study the third step of agricultural practices, that is adding manures and fertilizers to the soil for crop production. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizer. तो जो substances हम लोग soil में add करते हैं nutrients के रूप में for the healthy growth of plants के healthy growth के लिए, तो उसी को बोला जाता है manure and fertilizer. Soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. Okay, in certain areas farmer grow crop to crop in the same field. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. तो continuous अगर एक ही फील्ड में crops grow करते रहेंगे तो वहाँ के soil हमेशा बहुत पुअर हो जाते हैं, मतलब वो उनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी आ जाती है. तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, मैन्योरिंग. So what is the process of manuring? Farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. The farmers फिर से उसमें manures add करते हैं soil को replenish करने के लिए, और इस process को बोला जाता है manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Okay? Improper और insufficient अगर manuring करें तो वो weak plants होंगे, मतलब plants का growth अच्छा नहीं होगा. So what is manure? Manure is an inorganic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. Manure कहाँ से हम लोग को मिलता है? Plants और animal waste के decompose करने के वहाँ से. तो कौन करता है ये decomposition? Decomposition is caused by some microorganisms. Okay? The decomposed matter is used as organic manure. इसी decomposed matter को बोला जाता है organic manure. The dumping of plants and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. तो ये microorganisms किस चीज़ को decompose करते हैं? Plants and animal waste को decompose करते हैं, तभी जाके manure में वो convert होता है. The use of manure improves in soil texture. Soil texture में improve होता है. manure का अगर use करेंगे तो वो कहाँ पे improve करता है? Soil texture में improve करता है, और water retaining capacity और बोल सकते हैं कि water holding capacity में भी ये manure हम लोग को help करता है. It also replenishes the soil. Okay, so what is fertilizer? Fertilizer are chemical substances. Fertilizers क्या है? Chemical substances, और बोल सकते हैं inorganic substances in which are rich in particular nutrient. Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers क्या है? Urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash and NPK. What is the full form of NPK? That is nitrogen, phosphorus and potassium. I hope you know all these elements. I hope you studied this at previous, because these all are elements which is basically found in chemistry. Okay. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. So wheat, paddy और maize जब कोई फार्मर प्रोडक्शन देता है तो वो जनरली फर्टिलाइजर्स को यूज़ करता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छा उन लोग को हेल्प करता है ग्रो करने में. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. बट अगर हम लोग उसको एक्सेसिव यूज़ करें तो वो सॉइल को और ज़्यादा बहुत पुअर बना देगा और लेस फर्टाइल बना देगा. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर? तो फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. Fertilizer is an inorganic substance. A fertilizer is prepared in factories, whereas manure is a natural substance obtained from the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. कौन इन लोग को डिकम्पोज करता है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके, और वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? फील्ड में ही प्रिपेयर होता है. A fertilizer does not provide any humus to the soil, whereas manure provides a lot of humus to the soil. Okay, fertilizers are very rich in
plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, अभी जो हमने पढ़ा, manure is relatively less rich. Okay, and also add one more point, that is examples. Okay, add one more point, that is point number 5. You have to write all the examples of fertilizers and all the examples of manure. Okay. So what are the advantages of manure? The organic manure is considered better than fertilizers. Okay, this is because it enhances the water holding capacity of soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. Yes, gases कैसे exchange होता है? As we know that nitrogenous waste in the form of nitrogen always available in the form of gas, whereas उनको कोई भी प्लांट्स जब ग्रो करते हैं उनको कैसे यूज़ नाइट्रोजनस गैस को यूज़ कैसे करते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बैक्टीरिया हेल्प करता है जो फार्मर्स का बहुत फ्रेंडली होता है, दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया विच हेल्प्स to convert the gaseous nitrogen into soluble nitrogen. Okay, this is very important. I hope you all read the book, you will get this. And also I think you have read in your previous classes about this bacteria. Okay, which very helps the farmers. Okay, it increases the number of friendly microbes and improves the texture of soil also. Okay, so here the third step is completed. So moving to the fourth step, that is irrigation. Okay, irrigation is the most important because water is very essential for every living organisms. Okay, I hope you all know that water is very essential for every living organisms, and also plants is also a living organisms, and therefore water is very important for the proper growth and development of flowers, foods and seeds of plants. And water is absorbed by the plants. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. I hope you all know that the plants contain at least 90% of water, nearly about. Okay, and therefore this process is very important in all the steps of this agricultural practices. I hope you all understand it. Okay, I also gave this related questions to you. Okay, so that let's see what is irrigation. The supply of water to the crops at different intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. मतलब जिस क्रॉप को ज़्यादा पानी लगेगा तो ज़्यादा देंगे, अगर कम लगेगा तो कम देंगे. जैसे कि हमने पढ़ा था पैडी हमेशा रेनी सीजन में होता है बिकॉज इट्स नीड्स वेरी वाटर, तो इसीलिए सीजन टू सीजन, सॉइल टू सॉइल हम लोग को होता है. जैसे कि खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स सीजन टू सीजन होते हैं. किसी को कम पानी चाहिए होता है, किसी को ड्राई का ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को ड्राई वेदर चाहिए होता है, किसी को मॉइस्ट वेदर चाहिए होता है. सो दैट्स डिपेंड्स ऑन दिस ऑल्सो. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर. ओके, समर में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर बहुत हाई होता है. देयर आर 2 मेथड्स of irrigation. Okay, that first we have to study what are the sources of irrigation. Okay, that is well, tube well, ponds, lake, river. This is order that generally there are natural sources, and wells and tube wells are the man-made. Okay, and dams and canals. बट जनरली अगर हम लोग 2 मेथड पढ़े, जो इरिगेशन का जो 2 मेथड्स है डेट आर विच आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड और एक है जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है. तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में जनरली वो नेचुरल सोर्सेज से ही आता था पानी, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड ट्यूब वेल्स. दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट इज ट्यूब वेल्स. ओके, एंड दैट ट्यूब वेल्स आर ऑल्सो नोन एज पम्प्स. In the pumps is also like tube wells, but pumps are generally controlled generally controlled for the lifting water, which is used to run this, and something is used to run this pump, that is diesel, biogas, electricity and solar energy is generally used to run these pumps. Okay, so what are the traditional method? That is moat,
here you can see this is moat and this is chain pump. Here this is chain pump. This is Dhekli. Here you can see that Dhekli there uses well. Rahat, that is leveler system. Okay, these are the traditional methods of irrigation. So moving to the next, this is the second method of irrigation, that is modern method of irrigation. What modern method में वो two types का हो गया. So that is sprinkler system. Of the first one is sprinkler system. Okay, modern this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. Okay, ये जहाँ वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे uneven land है बहुत और वहाँ पे sufficient water available नहीं है. The perpendicular pipes, perpendicular means this, you know, the perpendicular pipes have rotating nozzles. उनमें क्या होता है, just like you can see this in this picture, that perpendicular pipes have no rotating nozzles on the top and are joined to the main pipeline, और वो main pipeline से join किया हुआ है. Okay, this is the main pipeline, this is the pipe. Okay, at main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Okay, sprinkler is very useful for sandy soil. Okay, and the next method of the next modern method of irrigation is drip system. In this system the water flows drop by drop. Okay, it is the best technique for watering fruit plants. Okay, yeah, the position of roots, just वो वहाँ पे ये जो ड्रॉप सिस्टम है, यहाँ पे सिर्फ वाटर ड्रॉप एंड ड्रॉप गिरता है, जस्ट एकदम पूरा रूट्स में ही गिरता है. जैसे कि स्प्रिंकलर में ऊपर से गिरता था, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है रूट से. यू कैन सी दिस हियर दैट इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन द रूट्स. तो इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है. डायरेक्ट रूट्स में पानी जाता है. The system provides water to plants drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. Okay, I hope you all understand this. So आज के लिए इतना ही for today's this. And you have I also give you some home assignments today. That is you have to, first of all, you are all know that you have to copy this in your fair copy and also remember it. Yes, surely also remember it. And I give you the 4 questions, that is for home assignments. Just try this because you will get the answers from the book only, and also I discuss in this class. Okay, मैंने डिस्कस भी कर दिया है और बुक्स में भी आंसर्स है, तो तुम लोग को श्योरली आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, what is the another method other than manure and fertilizer to replenish the soil? You will get this answer in book. मुझे ये कि आई वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू जस्ट रीड द बुक, बिकॉज मैं ये नहीं बताने वाली, क्योंकि ये तुम लोग को ही बुक से निकालना पड़ेगा और तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े भी हो. ठीक है. एंड वाई इरीगेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरीगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने बोला, वो भी आपको बुक से मिल जाएगा पूरे आंसर्स. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज used to run the pumps in traditional method of irrigation. ये भी मैंने तुम लोग को बता दिया है. एंड ये क्वेश्चन नंबर 4, you have to do it in your own. मैंने सब डिस्कस कर दिया है, अभी सब को खुद से कर लेना है. ओके, तो ओके, we will meet soon in our next class. Till then, stay safe in your home and also study.